Hello, I am Kavita Singh. Welcome to Lucid Lectures. Today we will discuss about the platelets. Okay. So like other blood cells, सबसे पहले we will see their numbers and then their shape and structure and then their function and then their destruction. Okay. So platelets. Platelets are also known as the thrombocytes. Why they are known as the? They are also known as the thrombocytes. Why? As I think everyone knows that the most important function of the platelets is in blood clotting. So ये क्या करती हैं? They help in the blood clotting while we ever get cut or any injury. ठीक है? So in that situation, platelets take the part in the blood clotting. That's why they are known as the thrombocytes. So okay. First of all, their number. They are about, it ranges from 1,50,000 to 50,000 to 3,50,000 per cubic millimeter of blood. Okay, in any adult person, their number ranges from the 1,50,000 to 3,50,000. Okay, as we have seen in the case of the RBCs. RBCs क्या थी? They were millions in the number. Or WBCs, they were only few thousands in number. And platelets, they are in lakh. Okay. Next, their structure. Okay, structurally क्या होता है? Platelets, they are the only the fragment of a cell. So while discussing the structure, we will need to discuss something about their formation also. So I'm taking formation with this structure. Okay, structure and formation. क्योंकि हमें structure के साथ formation थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. That's why I'm taking the formation with this structure. Okay, structurally, as I said, they are the fragment of the cells. कुछ ऐसे fragments होते हैं. ठीक है? They are the, and in that fragments they have only the cytoplasm surrounded by the plasma membrane. Okay. Cellularly, they do not have the, okay, as they are the fragment, they do not have the any organelle or the nucleus, but they do have the in some mitochondria. इनमें कुछ mitochondria, we can see some mitochondria, कुछ mitochondria होता है और plus some fragments of the endoplasmic reticulum. Although कुछ नहीं होता organelle में, कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ mitochondria while the we gonna see that कुछ mitochondria while the fragmentation आ जाते हैं और कुछ fragment of the endoplasmic reticulum. Fragments of endoplasmic reticulum. Okay. So structurally, they do not have the nucleus, they do not have the DNA or whatever other things, other organelles, but they do have some mitochondria and the endoplasmic reticulum. Okay. As I have said, they are the fragment of a cell, and that cell is the megakaryocyte. That cell is the megakaryocytes. मेगाकैरियोसाइट्स एक सेल्स होती हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती हैं जो फ्रेगमेंटेशंस के बाद क्या बनाती हैं? प्लेटलेट्स बनाती हैं. लाइक द आरबीसीज की तरह एंड लाइक द डब्ल्यूबीसीज, दे आर ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स ऑफ द बोन मैरो. ओके, एंड with the RBCs they also share the myeloid progenitor cells. Okay, तो इनकी भी जो पेरेंट सेल होती हैं वो क्या होती हैं? मायोलाइड प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, मायोलाइड प्रोजेनेटर होती हैं. ओके, ऑल्दो जो बेरी पेरेंट सेल होती है, सबकी सारी ब्लड सेल्स कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? स्टेम सेल ऑफ द बोन मैरो. ओके, सो उसके बाद स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो क्या बनाती है? मायोलाइड प्रोजेनेटर. मायोलाइड प्रोजेनेटर से क्या बनता है? मायोलाइड प्रोजेनेटर दे फॉर्म्स द प्रोमेगाकैरियोसाइट्स
karyocytes, and these pro-megakaryocytes forms the megakaryocytes. In general, mega means bigger, karyocytes means cell with a nucleus. Okay, so megakaryocyte a bigger cell, and if we see the structure of the megakaryocyte, they looks like something like this. Their margin is, very much folded like this. So many bulges are found on their margins or on their membrane, and as it is a big cell, ठीक है, ये comparatively bigger cell होती है. So when it flows in our blood, ठीक है, सब blood vessels are narrower and the cell is the bigger in size. जब ये blood vessels में flow करती है तो these margins are cutted off. ये क्या होती हैं, कट ऑफ हो जाती हैं या फिर फ्रेगमेंट ऑफ हो जाती है. तो यही जो फ्रेगमेंट्स होते हैं यही क्या बनते हैं, यही क्या होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं. ठीक है, फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट द मार्जिन्स फ्रेगमेंटेड आउट एंड दे फॉर्म्स द प्लेटलेट्स. एंड फ्रॉम वन मेगाकैरियोसाइट, एक मेगाकैरियोसाइट से अबाउट 5000 to 6000, about 5000 to 6000 platelets बनती हैं. ओके, so this was about the structure and formation. Platelets is in itself a very small topic. Okay, not very much we have to discuss in this. Okay, so now the life cycle. Okay, लाइफ साइकिल जो होती है प्लेटलेट्स की, इट इज अबाउट 5 to 10 days. कितनी होती है, 5 to 10 days की होती है इनकी लाइफ साइकिल. आफ्टर 5 to 10 days और आफ्टर लिविंग ऑल इट्स लाइफ और इन द older platelets, they are phagocytized in spleen में इनकी phagocytosis होती है प्लस लिवर में. Older platelets are removed by phagocytosis and that phagocytosis takes place in spleen and in liver. One more interesting thing about the platelets, अच्छा, like in RBC section, जब हम RBC section में उनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रही है, then I have said that the spleen is the graveyard, because in the eryptosis section we have seen that the phagocytosis takes place in the liver, spleen and the bone marrow. That's why spleen is known as the graveyard for the RBCs. Like as spleen is also work here, although we can see that I just said that spleen is the organ where the phagocytosis of the platelets is also takes place. ठीक है, इसका भी destruction spleen में हो रहा है by the phagocytosis. But in case of the platelets, spleen is also work as the reservoir. Okay, so you can say as a reservoir or as reserve bank. ठीक है, so spleen is also work as the reservoir for platelets. RBCs के लिए ये क्या था, ग्रेवयार्ड था, और प्लेटलेट्स के लिए क्या है, रिजर्वायर है, रिजर्वायर फॉर प्लेटलेट्स. सो हमारी बॉडी क्या करती है, पूरे of the whole production of the platelets, it takes about 40% and keeps in the spleen. ठीक है, पूरी प्लेटलेट्स का 40% हमारी स्प्लीन में क्या रहता है, रिजर्व्ड रहता है. इसलिए स्प्लीन क्या होती है, रिजर्वायर होती है प्लेटलेट्स के लिए, या फिर यू कैन से दैट द रिजर्व बैंक. तो क्रिटिकल कंडीशन या एक्सीडेंटल कंडीशन के लिए, मेडिकल प्रॉब्लम्स के लिए स्प्लीन क्या करता है, प्लेटलेट्स को स्टोर करके रखता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द रिजर्वायर ऑफ द reservoir of the platelets. And in case of the RBCs, it is known as the graveyard of the RBCs. Okay, so next, it's a function. Well-known function of the platelets is in hemostasis. Hemostasis simply the stopping the bleeding, hemostasis. ठीक है, ब्लड को क्लॉट करना
while we get any injury, cut or any other disease or the rupturing of the blood vessels, वो काम कौन करता है? प्लेटलेट्स करती हैं. They clot our blood, okay, so they stop the bleeding and that is known as the hemostasis. तो इनका most important function क्या होता है? hemostasis होता है. Along with the hemostasis, blood के आउटफ्लो को रोकने के अलावा और ये क्या करती हैं? दे ऑल्सो टेक पार्ट इन द हीलिंग ऑफ द वुंड्स. हीलिंग ऑफ वुंड्स, हीलिंग ऑफ वुंड्स. ओके, सो ब्लड आउटफ्लो कब होगा? द ब्लड वेसल रप्चर होती है. ब्लड वेसल को हील करने का वर्क भी एट अ सर्टेन लेवल इज ऑल्सो डन बाय द प्लेटलेट्स. ओके, अदर वर्क of the or other additional work of the platelets are like they also take part in the generating the inflammatory effect. They also secrete at some level serotonin, that's why they also take part in the inflammation. Okay, other additional work is that they also recruit the other platelets at the site of the injury. They also recruit the platelets at the site of injury. ठीक है, site of cut or injury. Okay, so like we need to clot the blood at the site of cut of injury. तो वहाँ पे क्या चाहिए होती है? platelets. Suppose some platelets are reaches there, so to call the other platelets, दूसरी platelets को भी वहाँ पे बुलाना है to clot the blood faster. So that work is also done by the platelet itself by secreting some factors. Okay, so this was the function. As platelets are chiefly involved in the blood clotting. Okay, they're chiefly involved in the blood clotting. Their increased number as well as their decreased number in the body or in a person, both are very fatal for the पर्सन. ओके, सो अगर नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या फिर नंबर बहुत कम हो जाए, बोथ दी कंडीशंस आर वेरी क्रिटिकल. इफ सो वी विल सी इफ नंबर डिक्रीजेस, अगर इनका नंबर क्या हो? बहुत कम हो जाए, इनका नंबर कम हो जाए फ्रॉम दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो क्या होगा? द ब्लड विल नॉट क्लॉट इवन ऑन द सिंपल कट. ओके, सो ब्लड अगर हमें कोई छोटा सा भी कट लग रहा है और ब्लीडिंग हो रही है तो इट विल नॉट क्लॉटेड वेरी इजीली. इट टेक्स टाइम. इन दैट टाइम ऑफ ड्यूरेशन वेरी मच ऑफ ब्लड आवर बॉडी bleeded out. This is the major problem, although so many physical problem also related with the decreased number of the platelets. So major problem is that blood do not clot easily even on simple cut, simple, or you can say that normal cut. So normal cut पे भी क्या होगा? blood clot नहीं होगा. If the number of platelets decreases very much. Okay, and in opposite to it, if its number increases, अगर नंबर बढ़ जाए तो क्या होगा? ओके, नंबर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? देन द ब्लड स्टार्ट टू क्लॉट विद इन आवर ब्लड वेसल्स. तो हमारी ब्लड वेसल्स में ही ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो जाएगा. और जब ब्लड वेसल्स में ही क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट थिंग इज नोन एज द थ्रोम्बोसिस. एज आई हैव सेड कि स्टैसिस हीमोस्टैसिस में वर्क करती है ना, इसलिए इनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस थिंग. दैट ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट होता है उसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसिस बोलते हैं. ब्लड क्लॉट. तो जब ब्लड हमारी वेसल्स में ही क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट कंडीशन इज नोन एज द थ्रोम्बोसिस. ओके, एंड इफ सच थिंग हैपन्स, मान लो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में नंबर इंक्रीज हो गया और ब्लड वेसल्स में ही क्लॉट होना स्टार्ट हो गया. सो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे होती है? वेयर द ब्लड वेसल्स आर वेरी नैरोवर, स्पेशली वेयर आर द कैपिलरीज आर देयर. ठीक है, सो सपोज दिस इज द ब्लड वेसल. ये हमारी कोई ब्लड वेसल है.
ठीक है, यहाँ पे क्लॉटिंग हो गई, यहाँ पे थ्रोम्बोसिस हो गया, ठीक है, हियर। सो अब यहाँ पे कोई ऑर्गन या टिश्यू है, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी, ना न्यूट्रिएंट पहुंचेगा, ना न्यूट्रिएंट पहुंचेगा और ना ही ऑक्सीजन पहुंचेगी, क्योंकि अब ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो ना ऑक्सीजन पहुंचेगी ना न्यूट्रिएंट पहुंचेगा, तो सिंपली क्या हो जाता है, लोकल ऑर्गन फेल्योर स्टार्ट। पहले तो लोकली ऑर्गन डैमेज होता है, फर्स्ट लोकल ऑर्गन डैमेज होता है, लोकल ऑर्गन और टिश्यू डैमेज, ठीक है, लोकली थोड़ा बहुत उनका डैमेज स्टार्ट होता है, एंड देन सम टाइम इट रीचेस टू द फेल्योर ऑल्सो, टिश्यू डैमेज, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू working of the tissues, for working of our tissues is the nutrient and oxygen. If it is not reaching, they will feel the local damage, and if this condition is very severe, तो ये body में कई part पे thrombosis हो जाता है, in that situation multiple organ failure can also be seen. तो अगर condition बहुत severe है तो multiple organ failure can be seen, और person क्या होती है, उसकी death हो जाती है अगर timely उसको treat नहीं किया गया, okay. So as it is a very small topic, let's take a quick revision of it. Okay, platelets are also known as the thrombocytes, as they take part in the hemostasis. Their number lies between 1,50,000 to 3,50,000. Okay, structurally they are only the fragment of a cell that is known as the megakaryocyte, and megakaryocyte is originated from the stem cell of the bone marrow, and they also shares the parent cell myeloid progenitor with the RBCs. Myeloid progenitors form the promegakaryocytes, and promegakaryocytes forms the megakaryocytes, and megakaryocyte after fragmentation forms the platelets, and its life cycle of one megakaryocytes, about 5 to 6,000 of platelets are formed, okay. Their life cycle is about only 5 to 10 days, and after the completion of the life cycle, they are phagocytized within our spleen and liver. Along with doing the phagocytosis of the platelets, the spleen are also known as the reservoir of the for the platelets, as they store about 40% of the total platelets in them for the medical severe conditions. Function, well known, hemostasis, it will stop the bleeding on the rupturing of the blood vessels, or in a simple, when we get the injury or the cut, okay. Additionally, they also take part in the healing of the wounds, and they also recruits, or they call the more platelets at the site of the injury or the cut, okay. So as they take part in the blood clotting, their increased number and decreased number both is very important. If their number is decreases from the threshold value, the blood do not clot very easily. This is not the only problem. There is many other physiological problem related to the decrease as well as increased number. I'm just telling you the most important one, okay. So if the number increases, the blood start to clot within our blood vessel, and that situation known as the thrombosis, okay, or you can say simply the blood clot within our blood vessels known as the thrombosis, or the blood clot is by increasing of that's just simple, okay. If such thing happens, the blood does not reaches to that organ or the tissue, in that situation that portion does not get enough nutrient and oxygen, so at instant it faces the local tissue damage, and subsequently the multiple organ can be seen in the severe condition if the number increases from its threshold value, okay. So this is about the platelets. Next in the series we have to discuss about the blood grouping, okay. Thank you.